welcome to Introduction to Bioinformatics class. This is our lecture number 6. Okay, let's have a recap. We have discussed about amino acids in detail, and we have talked about its structures, and we have seen there are 20 amino acids, and they are differentiated by the side chains of every amino acid. As we have also discussed about the energy factory in the cell, and we have talked about in detail about the glycolysis and how glycolysis process performed in the cell, and this glycolysis process is also present in all types of organisms. So this process is very important to understand the role of proteins. So we have also discussed about the centralizing effects. So today's content is we will discuss about the central dogma of molecular biology, in which we have to learn about the, as we have discussed about the structure of amino acids. This is the final product of the genetic or the DNA, central dogma of molecular biology, and whereas DNA molecule has DNA molecule is a genetic or a hereditary material, and that when it converts or transforms into RNA, this process is called transcription, and then the transformation or transformation of RNA into proteins and the chains of amino acid, and this process is called translation. We will discuss in detail about that. So we should know that ribosomes are the protein factory where proteins are synthesized while using this ribosome. Ribosomes are present basically in the cell, and this is the organ. You can say that as human body has some organs, and they perform some functions, as well as cells have the many different types of organelles present in them. So ribosome is one of them. So that ribosome makes proteins. So we are going to talk about the central dogma of molecular biology. Then we know the formula DNA to RNA, RNA to proteins. We will discuss in detail about that. So before going into detail, we should know the structure of DNA and RNA. We have already done the structure of amino acids. So this is the cell. I want to show you the ribosomes in them. As we know that in nucleus there is a genetic material present inside, and then mitochondria is an energy organelle, and the ribosomes are, you can see the dot like structure in the cell. This is the ribosome, and this is the protein factory. So now we will talk about the central dogma of molecular biology. So we understood that DNA transform into RNA, that process is called transcription, and from RNA to protein, that transformation is called translation. So we were talking about कि जो proteins की recipe है, how we will get it. So now is the time. The recipe for all the proteins that take part in our lives are stored in long molecules called DNA. We already know that DNA, what is DNA, or DNA is proteins are the part of the DNA. You can say that basically DNA की जो replication हो रही है, and then DNA is transforming into RNA, and RNA is producing proteins, or you can say that RNA is basically the protein का जो information है या जो information आ रही है, that is coming out of DNA. So in eukaryotes, DNA is tightly packed and stored in the nucleus of the cell. जो cell का nucleus है उसमें जो DNA है that is tightly packed and stored. Okay.
फिर है डीएनए, दैट इज डीएनए कम्स इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। डीएनए आपको डबल हेलिक्स की शेप में नज़र आएगा, दैट इज अच्छा। अब डीएनए हेलिक्स के ऊपर आपके सॉरी डीएनए के जो मॉलिक्यूल है उस पर आपको सीक्वेंसेस नजर आएंगे, दैट सीक्वेंसेस बेस्ड ऑन ATGCs and ATGCs are the nucleotides and nucleotides are the basis of the DNA, and that sequence will code for any gene, any particular trait of the organism. So with two complementary sequences we will discuss in the coming slides. Okay, each strand is a chain of nucleotides. जैसे हमने प्रोटीन केस में देखा था कि देयर इज़ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, एंड डीएनए में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इसकी चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? ATGCs दैट आर फिक्स टू शुगर बैकबोन। अच्छा, अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कैसे फिक्स्ड है? जैसे हमने अमाइनो एसिड के केस में देखा था, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसमें 3 कंपाउंड्स थे। These are carboxyl group or amino group, and the third one is side chain. तो इन साइड चेन से एंड देन उनके दरमियान जो दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड है उससे जो है वो फिक्स्ड है, दे आर स्टेबल। और अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है दैट विल बी fixed or stitched together via phosphate bonds. So nucleotides are organic molecules that serve as the monomer unit. अच्छा, जैसे अमाइनो एसिड्स है, वन अमाइनो एसिड इज अ मोनोमर यूनिट, और इसकी जब चेन बनेगी दैट इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड दैट डिपिक्ट्स एनी प्रोटीन। और अब यहाँ पर जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें हमारे जो मोनोमर यूनिट्स हैं दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स, और these are forming nucleic acid polymer। जो पॉलीमर एक चेन है डीएनए की उसको हम nucleic acid polymers कहेंगे। So both of which are essential biomolecules in all life forms on earth. Nucleotides are building blocks of nucleic acid। जो nucleic acids है उसमें जो building blocks हैं they are composed of 3 subunit molecules। अच्छा, नाइट्रोजीनियस बेस है, 5 कार्बन शुगर है, एंड एट लीस्ट 1 फॉस्फेट ग्रुप। दे आर ऑल्सो नोन एज फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जो वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंपोनेंट्स, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है और नाइट्रोजीनियस बेस है, इनके साथ इन कंपाउंड्स के साथ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दे आर स्टिच्ड टुगेदर एंड दे आर फिक्स्ड इन अ बैकबोन, जस्ट लाइक we humans have a backbone and it is still straight, either we are lying on the bed or either we are walking, हमारी जो बैकबोन है it still become fixed। So in the same way डीएनए की जो बैकबोन है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है एंड दे आर फिक्स्ड टुगेदर बिकॉज दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर आपको बेसिस मिलेंगे एंड दीज बेसिस आर फिक्स्ड वाया सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसके अलावा उन स्ट्रैंड्स के ऊपर जो बेसिस है उन पे वो जो स्टिचिंग कह लें या उस फिक्सेशन होती है तो उनके लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं जितनी जो स्ट्रैंड है दे आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, 5 कार्बन शुगर एंड एट लीस्ट 1 ग्रुप। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर वी शुड गो अहेड, ये आपको डीएनए का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और दीज आर 2 strands which is coiled together and there are 4 bases, ATGCs, adenine, thymine, guanine and cytosine. Okay, adenine is in the color of yellow, and green shows that thymine, and this also shows the cytosine, and the pink one is showing guanine. So this is the complementary sequence. If you see on one strand that ATGC, उसका जो अदर सेकेंड स्ट्रैंड है उसमें A T के साथ कंबाइंड है, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट होगा, एक का ऑपोजिट T होगा, T का A एंड G का C एंड C का G। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। So we were talking about the structure of DNA
एंड दिस इज़ द डीएनए केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। इसमें जो खास बात हमने अंडरस्टैंड करनी है, दिस ग्रीन पार्ट इज़ द एडेनिन, दिस पर्पल पार्ट इज़ द थायमिन, और ये these two nucleotides are fixed together, और इनके दरमियान इनके दरमियान इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है ये कैसे फिक्स है, इसके एडेनिन की अगर हम लेफ्ट साइड इस स्ट्रैंड को देखते हैं, एक स्ट्रैंड पर देखेंगे तो हमें नज़र आएगा शुगर ग्रुप है, this is the 5 carbon sugar, and this is the phosphate 5 carbon sugar and nitrogenous base, and ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं, दिस इज कंबाइंड विद द एडेनिन, और एडेनिन थायमिन के साथ कंबाइंड है विद द हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसकी दूसरे स्टैंड पर आपको अगेन 5 कार्बन शुगर नजर आएगा, और अगेन दिस फॉस्फेट ग्रुप, और अगेन मतलब दिस इज देयर आर 2 स्ट्रैंड्स, और हर स्ट्रैंड के ऊपर आपको फॉस्फेट 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट 5 कार्बन शुगर, इस तरह से एक उसकी बैकबोन नज़र आएगी, और इस बैकबोन में जो है हमें न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपस में उनकी बॉन्डिंग नज़र आएगी। और इसके अलावा 5 एंड जो है आपके जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है उसको हम 5 एंड कह रहे हैं, और 3 एंड जो है वो कार्बन जो शुगर है, पेंटोस शुगर है, उसका जो थर्ड पॉइंट कह लें उसको हम 3 एंड कह रहे हैं। सो यू कैन सी दैट if one strand is from 5 to 3 prime end, the other should be opposite और complementary है तो 3 to 5 end होगा, ठीक है। सो मोनोमर, अच्छा प्रोटीन्स, फॉर प्रोटीन्स द मोनोमर्स आर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के केस में जो मोनोमर है, सिंगल अमाइनो एसिड इज़ अ मोनोमर, और उसकी जो लॉन्ग चेन है वो प्रोटीन डिपेक्ट करती है। फॉर न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड में हमारे डीएनए और आरएनए दोनों आ जाते हैं, दीज आर द मोनोमर्स। न्यूक्लिक एसिड केस में हमारे पास मोनोमर्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ए सिंगल बेस जो है वो एक मोनोमर है, और उसका जो सेकेंड मोनोमर्स जो है वो जब कंबाइन होंगे दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, then it will make a thread like sequence of these bases or nucleotides. So each of which is made of pentose sugar, nitrogenous base and phosphate group. So दोनों स्ट्रैंड्स पे आपको फॉस्फेट ग्रुप और कार्बन शुगर नजर आएगा, और कार्बन शुगर नाइट्रोजनियस बेस के साथ अटैच्ड है, और देन इन द सेम वे जो दूसरी स्ट्रैंड है उस पर भी आपको फॉस्फेट और कार्बन शुगर नजर आएंगे, एंड बोथ न्यूक्लियोटाइड्स आर fixed together with the hydrogen bonding. So a monomer is the molecule that as unit binds chemically to other molecules. Large number of monomers units combine to form polymers. अच्छा, जब दोनों जब 1 by 1 सारे monomers nucleotides combine करेंगे, and that will make form a polymerization. That process is called polymerization. Okay, this is the central okay. These are the 4 bases: thymine, cytosine, adenine and guanine. You can see that adenine or guanine के there are 2 blocks, and cytosine and thymine is the single block. So adenine and guanine are the purines, and the thymine and cytosine are pyrimidine. We are just categorizing in these 2 purines and pyrimidine, or यू कैन से दैट कि थायमिन का जो ब्लॉक है वो आपको सिंगल नज़र आ रहा है, और एडेनिन का आपको डबल ब्लॉक नज़र आ रहा है। सो डीएनए इज़ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इज़ द थ्रेड लाइक चेन ऑफ डीएनए का। जैसे प्रोटीन में हमारे पास जो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड किया, तो डीएनए के केस में हमारे पास
chain of nucleotides. Nucleotides are ATGCs, and that carries the genetic instruction using in the growth, development, functioning, and reproduction of all living organisms, as well as many viruses. Okay, DNA and RNA are nucleic acids. So alongside proteins, lipids, and complex carbohydrates, they are one of the four major types of macromolecules. If you talk about the cell और cell के जो large molecules हैं, macromolecules हैं, complex molecules हैं, these are the DNA, RNA, proteins, lipids, and carbohydrates. So these are the essential for all all forms of lives. Okay, most DNA molecules consist of two bipolymer strand. अच्छा, DNA जो है, as we know that कि ये double helix है और वो bipolymer strands है, और that are these two, both bipolymer strands are going together each other to form a double helix. So there are only four different nucleotides. We have already knew that: cytosine, guanine, adenine, thymine, ATGCs. So across the strands, thymine always make a hydrogen bond with the adenine, and the cytosine with the guanine, according to the rule. So the strands are therefore complementary, and we have already discussed कि जो दोनों strands है, एक strand पे अगर A है तो दूसरे strand में उसका T होगा, और A और T will combine to each other because A का complementary T है और C का complementary G है. So at least when considering only sequence of the nucleotide, identical information. So now proteins are made in the cytoplasm in factories called ribosomes. Cytoplasm में we have ribosome as an organ of a cell, or cell are making proteins. Ribosomes are making proteins. A small subsequence of DNA, part of its chain, has recipe for the protein. And now you will understand that कि protein की जो recipe है, उसका कोई subunit होगा that is decoding a particular protein. There are many types of proteins, और हर प्रोटीन को डिफाइन करने के लिए डीएनए पर जो सब यूनिट है, सब सीक्वेंस स्मॉल यूनिट्स है, they are presenting the information about, or they are presenting the information of the recipe of the protein. This recipe has first to emerge from the nucleus. Okay, as we know that कि DNA जो है वो न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियस में हमारे पास DNA है. DNA is transforming into RNA. When it become a messenger RNA, it emerged out of the nucleus and then has to arrive to the ribosome. So ribosome is a complex molecular machine found within all living cells that serve as the site of the biological protein synthesis, and that process is called translation. Cytoplasm जो है वो एक jelly like substance होता है. It's just liquid form होती है. It's colorless. So okay. So now carrier molecule is called RNA, a ribonucleic acid. जो carrier molecule RNA क्यों है? Because we will get from RNA the proteins, or RNA पे RNA is coming through the DNA. So DNA is transforming RNA, और जो transcription का process हुआ है उसमें DNA में जो uncoded region है that will splice out, or that will make it a mature RNA. So that mature RNA is carrying is called as carrier molecule. वो carrier molecule क्यों है? क्योंकि that is going to translate the amino acid or amino acids, and that long chain of amino acid will become a protein. So to preserve energy and not make too much mess, it would be this line is just giving us that information. We are just splicing the uncoded region from the DNA, or after splicing from DNA to RNA transcription के process में जो uncoded region है that will be spliced out. So अब जो RNA पे जो information आ रही है that should be
copy, it goes for the amino acid sequence that makes the protein is to be copied to RNA. RNA की जो mature RNA है that will translate the into the protein, because now the RNA has the functional or coded regions of the proteins. So this copy is called the transcription. जो transcripted RNA है from DNA, RNA से जो DNA to RNA की conversion है, we know that this is transcription. So RNA, which is called a messenger RNA for its function. Messenger RNA हम क्यों कहते हैं? Because now it's going to be functional. That now is going to be functional or to translate the protein. Now RNA then travels from the nucleus to the ribosome. RNA nucleus से ribosome तक travel करेगा, where the sequence of amino acid is translated into the sequence of proteins. So this is the pictorial diagram of the central dogma of molecular biology. You can see that here it is the DNA. Now it has to replicate and translate the amino acids. So this is the double helix of DNA, और ये आपको जो green, blue, pink, maroon color and this light blue color is showing the, these are showing the bases of the DNA, which is ATGCs. अच्छा, अब जब it will be transcripted, transcription means that DNA is going to transform into RNA. So now from this at this step यहाँ पर क्या हो रहा है कि DNA जब convert हो रहा है RNA में, it is going to cleave from the center, and then इसका जो RNA है that is going to be replicate. ठीक है, इसका for example this is the RNA, this is the part of the DNA and that is single RNA, or because RNA is single stranded, when it is cleaving from DNA से RNA में conversion हो रही है, that process is called transcription, और इसके लिए हमें RNA polymerase जो है वो step को perform कर रहा है. So this RNA is going out of the nucleus. This portion is, you can assume that this is the nucleus. Here you can see this is nucleus, और RNA अब क्या है, coming out of the nucleus, and that is ribosome तक उसने travel किया, and now जो ribosome है, this RNA is going to be translation, means that कि ये proteins में translation हो रही है. Proteins are the amino acid. अच्छा, अब यहाँ पर डिटेक्शन करने के लिए थ्री लेटर्स को ट्रांसफ़र RNA आएगा, और यहाँ पर जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा उस पर जाकर ये फिक्स हो जाएगा, एंड नाउ दिस विल टेल्स अस व्हिच इज दैट amino acid. So that is going to be like this, coming out of RNA as a translation. In the translation process, when it is going to be scanned, कि अब ये बताएगा कि ये कौन सा amino acid है, and that is coming out of ribosomes, and it become a long chain of amino acid, and the long chain of these amino acids is going to become a protein, which will be functional, जिसने सेल में cellular processes को control करना है, या कोई भी catalytic reaction को start करना है, stop करना है. All activities will be controlled by the proteins. So this is all about molecular central dogma of molecular biology. Now we will see what is the difference between DNA and RNA. DNA strands of the deoxyribonucleic acid, and whereas RNA is a ribonucleic acid. DNA जो है वो double helix है, और RNA is a single strand है. Although DNA and RNA both carry genetic information, दोनों पर जो है वो genetic information है. There are quite a few differences between them. अच्छा, now you can see this is the DNA. जब ये
it will be cleaved, and that cleave means के दोनों strands बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और one of them is RNA, messenger RNA, mature RNA, that will be going to be translated further. So this is RNA, this is the DNA, और you can see कि एक strand था, this is the nuclear base of the DNA. This is, you can see that C, G, A, T, and up to so on, एक long sequence होगा, thread like एक उसका nucleotide से sequence होगा, और after splicing out it will become a messenger RNA. There are more general differences between DNA and RNA. DNA contains the sugar deoxyribose, while RNA contains the sugar ribose. The only difference between ribose and deoxyribose is that ribose has one more OH group than deoxyribose, so which has H attached to the second carbon in the ring. DNA is a double-stranded molecule, while RNA is a single-stranded molecule. DNA is stable under alkaline conditions, while RNA is not stable. DNA को हम alkaline condition में हम stable कर सकते हैं, preserve कर सकते हैं, but we cannot preserve RNA. DNA and RNA performs different function in humans. DNA is responsible for storing and transferring genetic information, while RNA directly codes for amino acid, act as messenger between DNA and ribosomes to make proteins. So DNA and RNA base pairing is slightly different, since DNA uses bases adenine, thymine, cytosine, and guanine. RNA uses adenine, uracil, cytosine, and guanine. As we have already discussed in the previous classes as well कि जो DNA है उसमें जो bases है that will be ATGCs, और RNA के केस में जो T है that will be replaced by uracil, and then A, U, C, and G you will see in the RNA. Uracil differs from thymine in that it lacks a methyl group on its ring. Okay, this is it for a start in molecular biology. So, but there are tons of open questions at this point. I hope आप लोगों की genetic material जो DNA है, it is going to convert into RNA and then proteins. So उससे relevant आपको बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आएंगे. So say where are the parts of DNA where the encoding information about the proteins located. We have detail discussed that DNA के कौन से पार्ट पर प्रोटीन जो है वो लोकेट कर रहा है. How does transcription know where to locate this part. ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कैसे पता चलेगा कि वो किस पार्ट पे है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द इंटायर डीएनए में कौन से रीजन जो है वो फंक्शनल है, कौन सा रीजन जो है वो कोडेड है. हाउ लॉन्ग इज द डीएनए कितना लॉन्ग होता है. हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, उनकी लेंथ कितनी होगी. इज देयर some other information stored in the DNA. क्या इसके अलावा भी कोई information है या नहीं है. Are all of the proteins produced all the time. क्या प्रोटीन हर वक्त जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. If not, who and how is this process regulated. So now next we will do some practical, that is complementary sequence from RNA sequence हम देखेंगे. And then we will see what is the percentage ATGCs in the DNA molecule. Translation हम manually genetic code को use करते हुए, amino acid chart को use करते हुए messenger RNA से हम amino acid की translation करेंगे. So thank you for today. Allah Hafiz.